Thank you, beta. Please turn your cameras on. Hurry up, beta, so we can start the class. Tabeen Ali Hassan, turn your camera on, beta. Shamir, where were you yesterday, beta? Why didn't you attend the class yesterday? Shamir, beta, कहाँ थे आप बेटा? जी? सर मुझे बुखार था। सुभान आप बेटे कहाँ पे थे कल? सुभान मुसफ आप बेटे टाइम से पहले क्यों चले गए थे कल बेटे? Sir, my net was gone. All of you बेटे सबका नेटवर्क चला गया था, सारी क्लास सब बॉयज का नेटवर्क चला गया था, ताहिर का भी, अली हसन का भी बेटे, सबका नेटवर्क चला गया था बेटे। ताहिर बेटे आप क्यों चले गए थे जल्दी? अली हसन कल क्लास क्यों छोड़ी थी आपने जल्दी बेटा? सर वो लाइट चली गई थी। सबकी बेटे जहाँ से हम एग्रीकल्चर है, अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, तो जो सोर्स जहाँ से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं बेटे, दैट्स प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो है जहाँ पे हम इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके we turn it into some manufactured goods. For example, steel industry, cotton, textile industry, जहाँ पे हम कॉटन लेके अगर हम टेक्सटाइल बनाते हैं, या कोई वेजिटेबल लेके हम कोई उसको प्रोसेस करके कोई खाने की चीज बनाते हैं, तो that's secondary industry जहाँ पे हम प्रोसेस करके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके we are turning it into some manufactured goods बेटे। And tertiary industries are basically services like banks and schools and transportation that provide services बेटे, that is not producing anything, that is not manufacturing anything, but that is helping the manufacturing industry बेटे, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प कर रही है, but that is tertiary industry। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी में tertiary industry का जो contribution है, that is more than the primary and secondary, because you can imagine the schools, the banks, the transportation, they've become so huge that their contribution is more than the primary and secondary industry बेटे, ठीक है। Yesterday Roma had read page 37, first the left side बेटे, so today we need to read the right side of page number 37 बेटे, ठीक है। Who wants to read? Raise your hand बेटे, hurry up, raise your hand. Who wants to read? Okay, Musaf, start बेटे. Kinza and Roma, I'll allow you to read after Musaf बेटे. Musaf, start बेटे, शाबाश. Note not all the factors बेटे. Now before Musaf starts बेटे, please look at figure 3.4 on page number 37. This figure shows you the factors that affect the secondary industry, which are capital means money, that you need to set up a industry, raw material. You all understand raw material, जैसे textile है तो उसके लिए cotton raw material है. Labor, the people who work in the industry, water and power supplies. हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि power supply का कितना बड़ा issue है, कि power supply नहीं होती तो हमें घरों में, हमारी इंडस्ट्रीज में हमें प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट आपको टैक्स ज्यादा कर रही है, कम कर रही है, दैट इम्पैक्ट्स योर इंडस्ट्री। मार्केट्स, वेयर डू यू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। आपने बहुत अच्छी चीज बना ली, यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट, यू हैव द रॉ मटेरियल, बट इफ यू आर नॉट एबल टू सेल इट, देन उसका फिर कोई फायदा नहीं है बेटे। फिर मैनेजमेंट है, आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कर्फ्यू लग गया, अनरेस्ट आ गई, लॉकडाउन आ गया, कोई भी चीज ऐसी आ जाती है, then that affects your industry बेटे। You made something very good, but you're not able to sell it because there is political instability, तो then there is, that thing is of no good to you. And then there is transport and communication. Obviously you have made something, but you should be able to take those things to the market बेटे, ठीक है। For instance हमारी लाहौर में let's say बीडन रोड है जहाँ पे इलेक्ट्रिक गुड्स मिलते हैं, तो if you are a manufacturer of electric goods बेटे, you need to have transport, जो आप अपनी चीजें ले जाके, फैंस हैं आपके, मोटर्स हैं, लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, you take those things to Beedon Road to give it to the shopkeeper. If you don't have the transport बेटे, तो आपको आपकी फैक्ट्री से तो आके कोई नहीं लेगा ना। जैसे आपकी गुजरावाला में, गुजरात में फैक्ट्री, तो वहां से तो कोई नहीं लेगा, तो वहां से आके आपने पूरे पाकिस्तान में अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो you need to have a transportation system. So we're reading about the factors that affect the secondary industry बेटे। Musab, start reading बेटे। Not all the factors, from not all the factors बेटे, start reading. Not all the factors shown in figure 3.4 are important for the development of every industry.
In addition, if the same factor is important for two industries, then it may be much more important for one of the industries than for the other. For example, if there is a threat of war, that is political instability, then a foreign company which was thinking of expanding its factory may decide not to do so. Even if there is a threat of war, a family owned workshop in a city or village may still be able to take an extra work and expand its business. Some of the factors on the diagram may have a big influence on how well a secondary industry continues to perform after it has been developed. For example, if there are few customers for the goods produced, that is, if there is only a small market for the goods, then the factory or workshop will do little business and will probably have to close. If there is poor management, then the goods produced may be of poor quality. As a result, markets may be lost and the business is likely to fail. Markets and management also have an influence on primary and tertiary industries. If they are to be successful, these industries also must make sure that their customers are satisfied. They have to do this in different ways as shown by Pakistan's primary marble extraction industry and tertiary fruit exporting industry. Okay, beta. Thank you, Musa. So these are factors, beta. I explained to you what I already explained to you, beta. As far as war है, for instance, the threat of war, उसमें क्या होगा? You think they will be able outside to manufacturing, not right? So political instability होगी, they will not come. But those people who are inside, they will continue to work because they don't have a choice. They have to work it. So if this political instability, the factors जो हैं हर इंडस्ट्री को एक ही तरह से इम्पैक्ट नहीं करते, हर इंडस्ट्री को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. And then बेटे the management, if you have to have good management, किसी भी कंपनी को किसी भी इंडस्ट्री चलाने के लिए अगर आप मैनेजमेंट नहीं है आप कैसे मैनेज करेंगे. नंबर 2, आपको जो मार्केट है मार्केट आपकी जितनी चीज आप बनाने का मार्केट अच्छी नहीं है तो आप उस चीज यू विल नॉट बी एबल टू सेल दैट बेटे. ठीक है. Who wants to read now? Is that you raise your hand so you read the next question. Is that read beta? Roma, you read now. Roma. Sir, can I read after Roma? Okay. Roma, you read better. Sir, before reading, I have a question. Sure, better. Sure. Sir, can you please explain figure 3.3 on page number 36? Okay. Figure 3.3 on page number 36, beta. This is a power station. Power station means a station that is producing electricity, beta. ठीक है. तो सबसे पहले बेटे यहाँ से एक वाटर सप्लाई आ रही है. On the extreme left hand side, Roma, you can see a water supply through a pipe. There's a water supply बेटे. ठीक है. वाटर को आप हीट अप करते हैं तो आपने वो जो पावर स्टेशन है आपका या बेटे वो कोल से चलता है या ऑयल से या गैस से. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पावर स्टेशंस. जो भी पावर स्टेशन होगा वो फ्यूल है बेटे. कोल, ऑयल और गैस बेटे. जो भी पावर स्टेशन है दैट इज योर फ्यूल बेटे. तो उस फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको पानी चाहिए. आप वाटर से हीट अप करेंगे, वाटर को हीट अप करेंगे तो बर्न दैट फ्यूल बेटे. ठीक है. तो आप उस फ्यूल को बर्न करेंगे तो उससे स्टीम पैदा होगी बेटे. और आपको अच्छी तरह मालूम है घर में भी आप खाना बनाते हैं तो जहां स्टीम पैदा होती है वहां पे आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ता है ताकि वो चीज उस स्टीम वहां से बाहर निकल जाए. ठीक है. तो वो आपने ऊपर वो चिमनी सी आपको नजर आ रही है. चिमनी से वो जो फ्यूम्स हैं उसके वो बाहर निकल जाएंगे. लेकिन जो आपकी जो स्टीम पैदा होगी वाटर को हीट अप करने से तो उस स्टीम से बेटे आपका फ्यूल बर्न होगा उससे स्टीम पैदा होगी. उस स्टीम से बेटे आपकी टर्बाइंस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. वो टर्बाइंस रन करेंगी उस स्टीम से और उनसे फिर जनरेटर ऑन होगा जिससे एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेटे. ठीक है. और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो आपको वो ये जो आपको जो पोल से नजर आ रहा है एक्सट्रीम राइट पे
आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर आपने एक नेटवर्क बिछाया हुआ है पोल्स का और केबल्स का, जिसके थ्रू वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरे पाकिस्तान में ट्रांसमिट होती है। तो अगर हम लाहौर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो जरूरी नहीं है कि लाहौर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी हो रही है, या कराची में, इस्लामाबाद में प्रोड्यूस भी हो रही है। ये प्रोड्यूस कहीं और हो रही है, हमसे कहीं दूर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उनको इस नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है हमारे ये बड़े शहरों तक, हम सब तक, हमारे घरों तक, हमारी फैक्ट्रीज तक, हमारे स्कूल्स तक, उस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। अब आप ये बताइए रोमा कि इसमें और जो हमने हाइडल पावर थी उसमें क्या डिफरेंस है बेटे? आपने दोनों में डिफरेंस बताएं क्या था बेटे? हाइडल पावर मींस जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है डैम्स में, जो हमने पहले पढ़ा है, और ये हम कर रहे हैं किसी फ्यूल को बंद करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? सर उसमें पानी जो होता है वो हमारा वो बच जाता है और वो स्टोर हो जाता है, और ये वाला वो यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास बेटे देखिए, इसमें हम फ्यूल बर्न करें ना, कोल, नेचुरल गैस और ऑयल, कोई हम कोई फ्यूल बर्न कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ये फ्यूल सारे नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, हम जब अभी हम आगे से हम देखेंगे, जो आपने वीडियो अगर आपने देखी है कि हम नेचुरल गैस और ऑयल हमने देखे ना कि नेचुरल गैस और ऑयल बहुत मुश्किल से बनता है। वो जो प्रोसेस अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, नेचुरल गैस और ऑयल जब बनता है बेटे, उसमें आपकी वीडियो बता रही है एटलीस्ट 1 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन 10 लाख ईयर्स लगते हैं बेटे, इमेजिन उनको बनने में बेटे, और हम उसको यूज किए जा रहे हैं। तो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं, और हम उसको वेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। जो पावर है, जो वाटर है बेटे, वाटर तो आपको पता है कि एक रिन्यूएबल है, बारिश होती रहती है, लंबी, स्नो होती रहेगी, बारिश होती रहेगी, तो वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ना, तो वाटर हमारे पास आ जाता है, तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्लस हम उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हम स्टिल उस वाटर को, जिस तरह एग्जैक्टली डब्ल्यू सेड इट, हम उस वाटर को जाया नहीं कर रहे हैं, हम वाटर को आगे भेज देते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेज पे दोबारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, या हमारे इरिगेशन के लिए भी यूज हो सकता है। तो एक तो वाटर वेस्ट नहीं हो रहा, और प्लस हमें वाटर की सप्लाई थ्रू रेन और स्नो मिल जाती है। लेकिन इनमें ये थर्मल पावर स्टेशंस हैं, इनमें ये फ्यूल हमारा जो बर्न हो रहा है, इसकी वजह से ये दिस इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंसिव एंड वी आर यूजिंग अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम यूज करना, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रेफर करनी चाहिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस तरह सोलर एनर्जी है, हमें वो प्रेफर करना चाहिए। हमें ये जो हाइडल पावर है जो वाटर से प्रोड्यूस है, हमें ये प्रेफर करना चाहिए ओवर दीज थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन हम इमरजेंसी के तौर पे यूज करते हैं, हमें कम यूज करना चाहिए जब हमारे पास हाइडल पावर इनफ नहीं है या सोलर पावर इनफ नहीं है, तो फिर हमें यूज करना चाहिए, अदरवाइज हमें यूज नहीं करनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड नाउ द डिफरेंस बेटा? यस। ओके बेटा, रीड नाउ। Markets in Italy for Pakistan's marble blocks. In 2004, importers in Italy of blocks of marble extracted from Queries बेटे, any place from underground from where you extract anything ना बेटे, कोई भी जगह जहाँ से माइन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे क्वेरी बेटे, तो आप मार्बल जो है मतलब एक नेचुरली एग्जिस्ट करता है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, आप मार्बल बनाते नहीं है किसी जगह पे, आप मार्बल को सिर्फ शेप देते हैं, इसकी कटिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो मार्बल होता है फॉर्म में, उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ क्वेरी बेटे। यस बेटे। Quarries in Pakistan explained that they needed bigger blocks, which had been extracted carefully. The marble should be cut in a quarry and not be blasted by using explosives. This was so that there was little wastage when manufacturing marble products. So, in order to satisfy the customers in Italy, it was necessary for the marble extraction industry to plan to improve the transport facilities in order to be able to transport bigger blocks by modern extract machinery, so that the blocks could be cut carefully. Keep reading बेटा, keep reading रोमा। A liquid and a gas either come out. तो बेटे वहीं पे आपने ना उसके जहाँ पे markets in Iran for Pakistan's fruit बेटे। Okay. Markets in Iran for Pakistan's food. In 2004, importers in Iran of quinoa and mangoes grown in Pakistan wanted to continue to import the fruits. However, the Iranian quarantine department (IQD) needed a guarantee that the fruit was not contaminated by fruit flies after it was harvested and during transport. The Pakistan
Horticulture Department and Export Board was able to satisfy the IQD that the cold storage facility were, were good enough to prevent such contamination. As a result, Iran agreed to continue to allow the import of fruits from Pakistan. So they're giving you two Example, examples, Roma and others. Bete, they're giving you two examples कि जहाँ पे हमने we modified our processes to satisfy our customer. In the first case in Italy, they wanted marble, but they wanted that the marble should be, they wanted bigger blocks of marble, and they wanted that we should blast it. So we in the process, so we get big marble and we arrange transportation. We can transport bigger pieces of marbles from Pakistan to Italy. Once you are able to do that, we continue to buy marble from us. We did not lose our customer. Similarly, in Iran, they wanted to in 2004 they wanted to import even mangoes. You know well that our mangoes famous all over the world. Our quinoa and our citrus fruits are famous all over the world. We produce हमारे होते हैं टेस्ट है वो पूरी दुनिया से अच्छा है. All over the world people like to import our mangoes and our news. So they wanted to import that. लेकिन they wanted to make sure it is not infected. उसमें कोई उसमें infected means उसमें कोई बैक्टीरिया ऐसी चीज नहीं है. Fruit lice लिखा है कि वो नहीं है. So then what happened is the horticulture department they were able to satisfy हमने इसको इस तरह हमने process किया है कि उसमें वो fly नहीं होगा, वो infected नहीं होगा. Once we were able to satisfy them, they started to continue to buy from us. So if we did not satisfy them, क्या होता कि हम हमारी market lose हो जाती है और हमको हम supply ना कर पाते, right? इसलिए industry में it's extremely important कि हमारी जो department है हम उसको fulfill करें, ठीक? Kalim beta, and your camera on, hurry up, beta. Otherwise, you don't say, Tahir, and your camera on, hurry up, beta. Kinsay, beta. Kinsay, read, beta, पहले भी आपने कहा था. Muzammil, you want to read? Sorry, Kinsay, are you reading, beta? Yes. Louder, beta, louder. Examples of industries and the factors that influence them. Primary industry. Figure 3.1 shows that agriculture is described as primary industry, as are mining, quarrying, fishing, and lumbering, crude oil, and natural gas. A liquid and a gas either come out of the ground of their own accord or are pumped out. They are neither mined nor quarried, but are extracted from the grounds are called extractive industries. Natural gas Just 1 second, production. beta. Beta, these again and again I'm explaining to you, beta, mining, quarrying means आपने किसी जगह से लैंड से कुछ चीज कोई मार्बल कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट किया है. फिशिंग ऑब्वियसली नो टू कैच अ फिश. बेटे लंबरिंग बेटे होता है कि आपने जो वुड है उसको कमर्शियल पर्पस के लिए इसको कट किया है. फॉरेस्ट वुड को कमर्शियल पर्पस के लिए आपने कट किया है. दैट इज कॉल्ड कमर्शियल पर्पस मींस टू सेल इट टू अदर थिंग्स, टू मेक थिंग्स फ्रॉम इट. उसको आपने वुड को कट किया है, ट्रीज को काटा है बेटे, दैट इज लंबरिंग बेटे. ठीक है. क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ऑब्वियसली आपको पता है हम प्रोड्यूस नहीं करते क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं गैस और नेचुरल ऑयल और गैस बेटे. तो यही सब चीजें जो हैं these are all primary industry बेटे. ठीक है. Now this video जो हमने वीडियो मैंने आपको दिखाई थी बेटे उसके बारे में है कि how is natural gas produced underground बेटे. ठीक है. First read this paragraph and then we'll watch the video बेटे. तो who wants to read now? Raise your hand, hurry up. Who wants to read? Okay, Tahir read बेटा. Tahir read बेटा. Yes, natural gas production in Pakistan. How was natural gas formed? Millions of years ago, marine plants and animals died and settled on the seafloor. They were buried by the sediments, which were brought by river and deposited on the seafloor. These sediments grew thicker. The weight of the layers of sediment on the top made the layers at the bottom solidify into sedimentary rock. The weight of these layers of sedimentary rock and the action of bacteria caused the सर dead आवाज plants नहीं and आती, animals बहुत to आवाज आ रही decompose
and turn into both crude oil and natural gas. Sedimentary rocks have pores, tiny spaces that allow groundwater, oil, and gas to flow through. Do you know why the gas is above the oil and the oil is above the water? The water and the gas collect underground when there is a fault in the strata as shown in the cross section. Figure 3.5. We learned in book 1 about the earth movement that caused folding the rocks and upfold such as this is called an anti-slime. The pores of different layers of rocks vary in size. The rock through which the water, oil and gas flow easily has big pores and is called permeable rock. You can now work out what permeable rock is. Okay, but this is very extremely interesting. हमने देखा था, हमने this said the book is saying millions of years ago marine plants, animals, marine animals died and sea floor. Sea floor पे आपने deep नहीं, but as you go further in the sea पे तो बहुत meters use हो जाता है. Ocean और sea floor पे like आपको नजर पानी में आता है लेकिन उसकी depth is in kilometers, बहुत ही ज्यादा depth हो जाती है. तो वहाँ पे there's a whole world down there. हम imagine भी कर सकते हैं, मतलब ये देखिए वहाँ पे क्या होता है. This thing, the marine plants and animals died and settled on the seafloor, and the ocean के नीचे floor पे settle हो गए. It's very interesting way हमने पढ़ा, river जब flow करता है, जब river mouth तक आता है, तो फिर क्या होता है? तभी your cameras off बेटे, you're constantly disturbing me. your cameras off बेटे, बार-बार हम disturb करें, last बार-बार interrupt करनी पड़ती है. मुझसे आप freeze कर देते कैमरा को, मुझे बार-बार देखना पड़ता है, बेटे बार-बार मुझे class रोकनी पड़ती है. ताहिर, I'm giving you this reminder, but I'm going to throw you out of the class. तभी the river it comes, river mouth है, we read about the river mouth, river flow करता है, the point with the river enters the sea or the ocean, तो वो अपने साथ जो कुछ carry कर होता है, जिस time में अपने साथ carry कर होता है, उसको वहाँ पे deposit कर देता है. ठीक है, तो deposit river अपने साथ लेके आ रहा है, वो deposit करता जा रहा है, तो those deposits या deposit कर रहा है, उसी deposit से उसके ऊपर एक वेट पड़ना शुरू हो गया. और years millions of years, एक दो साल 10 की बात है, 100 years की बात है, millions of years decompose हुए, वो that turn into gas and oil. This is extremely interesting. कितनी जबरदस्त एक रिसोर्स मिली गैस और ऑयल की. लेकिन आप देखें कि अवतार ने किस तरह चीजें बनाई हैं बेटे. डेड प्लांट्स एनिमल्स डिकम्पोज हुए तो गैस और नेचुरल ऑयल में चेंज हो गया. एंड दिस हैपेंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो और हमारे काम आ रहा है. तो how many of you have seen the video? नहीं देखी बेटे, जो बताया शेयर दियो. रेज योर हैंड जिसने देखी है बेटा. सबने देख ली? मुझे आपने देखी? यस सर. रोमा आपने? सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है, सही से आवाज नहीं आ रही. अब बाकी सबको भी आवाज प्रॉब्लम आ रही है? सब ये आवाज साफ आ रही है बेटा? सर साफ आ रही है. सर मुझे बहुत लैग कर रहा था. मुसफ आपको आ रही है आवाज बेटा? नो आपको नहीं आ रही है? जी. यस कलीम आपको बेटा सर आ रही है. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू बेटे. तो बेटे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी बेटे तो वीडियो देख लें. तो इट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बेटे वो वीडियो कि किस तरह ये ऑयल और नेचुरल गैस हमारा फॉर्म हुआ है बेटे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. दिस पैराग्राफ द वीडियो इज एक्चुअली अबाउट दैट, कैसे वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दे डाइड, दे गॉट डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशन. उसके ऊपर से सेडिमेंट्स से जो रिवर लेकर आ रहा था वो उसके ऊपर वेट पड़ता है, से डिकम्पोज हुए. आप जो देन टॉकिंग अबाउट रॉक्स, वेटेड रॉक्स में होल्स होते हैं. तो रॉक्स जो कि होल्स, अगर वो होल्स होंगे तो उनके थ्रू गैस ऑयल बाहर निकल आएगा बेटे. राइट, तो दोस आर कॉल्ड परमेबल रॉक्स बेटे. ठीक है,
वो those are called permeable socks. और अगर उनसे उसमें holes नहीं हैं जिनसे oil gas बाहर से बाहर निकल सकता, those are called impermeable rocks. ठीक है, that's the only difference. किन rock से आप extract हैं, किन rock से extract नहीं कर सकते. So if you not watch video, let's save time. अगर आप video watch नहीं की है तो उसके बाद में this other video about on your next page there is a topic about the plywood industry पाकिस्तान में जो डोर्स बनते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में है, तो उसके बारे में एक वीडियो है राइट आफ्टर द क्लास आई शेयर दैट विद यू, और वो आप लोगों ने क्लास जरूर देखनी. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बिफोर वी स्टार्ट द क्लास प्लीज वॉच दैट वीडियो. यू हैव होल वीक बेटा, वी हैव द क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे, वो वीडियो भी आप देखिएगा. तो जब हम उस प्लाईवुड इंडस्ट्री के बारे में वीडियो होगी तो इजी होगा अंडरस्टैंड करना उस प्रोसेस को. Last बेटे I give you the notes chapter number 2, you have to complete those notes बेटे. I send you notes of chapter number 2 and you have to complete that in the copy बेटे. Fill in the blanks and true and false. वो आपने उसके आंसर्स ढूंढने हैं जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे क्लास में, और आंसर्स अपनी कॉपी करने हैं. 39 move on to your बेटे. 39 you read, you want to read page 39. हरिए बेटा रीड ताबीन पेज 39. सर आपकी आवाज बहुत अटक के आ रही है. अच्छा जी, अभी भी आवाज सही नहीं आ रही बेटे आप लोगों को? अब बताइए बेटे, अभी भी आवाज ठीक नहीं आ रही है? आ रही है आवाज आपको बेटा? अली हसन आपको आवाज आ रही है? अली हसन आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes. चले चले बेटे अपना who wants to read? ताबीन पढ़े बेटा. ताबीन is here, is he gone? ताबीन is not here. Kinza, you have, did you read better? You want to read? ताबीन आपने रीडिंग करनी है बेटा? Excuse me, sir. जी बेटा. I have to ask a question from figure 3.5. Which figure बेटा? 5. Which page बेटा? 38. Yes बेटा, yes. Yes. Sir, what is well? बेटे well is इसको हम उर्दू में कुआं कहते हैं ना बेटे. That's the place from where you extract the oil or natural gas बेटे. Okay. जहाँ से आप लोग निकालते हैं ना बेटे ऑयल, वो एक वेल जहाँ पे हर जगह से तो वेल नहीं बनता, तो वो हमें फाइंड करना पड़ता है कि कहाँ पे हमें फील कि नेचुरल गैस या ऑयल का रिजर्व है, तो वहाँ पे वेल हो गए, और उस वेल से हम जिस तरह पानी, कुआं तो एक छोटा सा होता है, हम पानी निकालते हैं, तो मैसिव एक वेल होगा जहाँ से हम ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटे. ठीक है. एंड जो पानी भी हम जमीन से आ रहा है, ऑयल भी आ रहा है, नेचुरल गैस भी. ये दिस फिगर दैट यू जस्ट सेड बेटे, दिस फिगर इज टेलिंग यू कि जमीन में सबसे नीचे पानी है, पानी से ऊपर ऑयल है, और ऑयल से ऊपर गैस है बेटे. Okay. ठीक है. चल, who is reading? हरिया बेटे, we just have 5 minutes, we just want to finish this class page 39. Who wants to read बेटे? You want to read? Sir, I can read. हरिया बेटे page 39 read. Sir, from where? Page 39 बेटा. From the beginning. From the start बेटा. Markets in Italy for Pakistan marble blocks. In 2004, 39 I said, Kabin, you're not paying attention. We have read all of this page. 39 beta. where is natural gas extracted? The map figure 3.6 shows the 4 most important places for gas production. Gas was discovered at Sui in 1952 and it produces twice as much as Mary, which is the second most important producer. Gas well at Pitco 1977 and Concord 1987 together produce only a half of Mary's output. What proportion of Sui's output is produced by Pitco and
transport. Together, skilled engineers are required for this work. How is natural gas distributed? The map figure 3.6 also shows the pipeline through which the gas flows. These pipelines are expensive to build and maintain because they are so long and go through un, un, uninhabited areas. A large amount of capital is therefore required for the construction and maintenance for this network of pipelines. What are the markets for natural gas? What Okay, do you notice? Abhi, stop it. So we just have 2 minutes. I'll explain to you this figure 3.6 in your book, page number 39. If you look at the middle of the figure, there's a place called Sui. That was discovered in Sui, 1952, and this slide is called Sui. सोचे हम गैस होती है, हम गैस कहते हैं बहुत अटक रही है। वहाँ पे सुई गैस वहाँ पे हमें आई थी, सुई के मकाम पे डिस्कवर हुई थी, वहां से गैस अभी वहां से कहीं ना कभी तो जाकर गैस खत्म हो जाएगी ना, ज्यादा उन्होंने एक रिसोर्स में कॉस्ट उन्होंने जमीन में प्रोवाइड किया और उसको 68 ईयर्स से यूज कर रहे हैं। सो मैं इसको ऑल्टरनेट होना बेटे अदरवाइज दिस रिसोर्स और आप देख भी रहे हैं अक्सर देखा होगा कि आपके गीजर्स बंद हो जाते हैं, आपके चूल्हे के लिए गैस कम हो गया है, आपने यू मस्ट हैव नोटिस कि गैस की सप्लाई विंटर्स में कम हो जाती है। We don't have enough gas, and what we had, we were very quickly using the gas. So, Sui के बाद Murray, वहाँ पे not Murray, that is close to Islamabad, that is close to Sui in Balochistan, और Tankot, Apir, these are the 4 places वहाँ पे हमने gas discover किया, and from those places we are transporting it to the rest of the country. But the next paragraph we were not able to read. Explain to there is non-renewable energy, ये दोबारा शायद बने ना बने, तो हमें इसको we have to use it carefully and we have to save it, और अगर हम इसको और reserves find नहीं करेंगे या हम इसको खत्म कर देंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी और फ्यूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, so stop right as I said. The next is about the distributed and video. Please watch the video before the next class and also send you the question number 2. आज की लेक्चर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज डिस्कस मी। थैंक यू। Rohan, any question about what we did today? And Samir, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.